Hi guys, welcome back to my vlog. और आज का vlog बहुत ही ज़्यादा exciting है. So in today's video, I actually want to gift wrap all the Christmas presents. I have a very busy week, like next week, and Christmas भी Thursday को आ रहा है. I think Christmas Thursday को आ रहा है. तो मैं सोच रही हूँ कि मेरे पास आज का दिन है और मेरे पास कल का दिन है. So I want to gift wrap all the Christmas presents that I have to give to the people I love. So आज हम वो करेंगे. Plus I want to show you that this chia seed pudding, like the coconut chia seed pudding that I made, dude, it is so freaking good. I've been started eating healthy, and if you want the recipe, I will put on the screen here, or like when I will show you the jar or like the recipe itself. It is so good. If you love coconut milk, coconut flavor in general, like you guys really need to try that. It's really good for stomach, digestion, gut health. It is so good. Like I've been so last night I tried that recipe and I soaked it and put it in the fridge. तो आज मैंने सुबह वो खाया है, इतना यम्मी था वो. The best part is like अगर आप उसके 4-5 चम्मच भी खा लो ना, your stomach is full. Like it is heavy in general. Like वो खाना, it's like heavy in general. Like वो जल्दी आपका पेट fill कर देता है. So and you guys are wondering why do I have my makeup on? मैं ना कुछ products test कर रही थी for my makeup video जो मैं अभी बनाऊंगी. आई डोंट नो आज बनाऊं या कल बनाऊं. अभी तो अंधेरा हो गया. देयर इज नो गुड लाइटिंग, सो आई हैव टू यूज ऑल माय लाइक रिंग लाइटिंग्स एंड अदर. बट आई एम नॉट लाइक रियली इन मूड टू डू दैट. और मैंने बालों में ऑयल भी लगा रखा है, सो या दे आर लिटिल ग्रीसी. तो मुझे अपना हेड वॉश भी करना है. फिर मैं सोच रही हूँ कि शायद मैं टिकटॉक के लिए लाइक I have few plans, but I don't know मैं क्या करूँगी. But the major plan is कि मैं आज Christmas presents wrap करने हैं और मैं आपको दिखाऊंगी कि मैंने क्या क्या buy किया है. Plus yesterday I bought this Essence का lip balm. This is the Super Peptide Glossy Lip Treatment और ये coral pinkish shade में है. And I've applied this on my lips. It is so good. It's very hydrating. But I still love my Laneige lip mask so freaking much. This is okay. Like, you know, for $5 you're getting whatever you're paying for. But still, I feel like Laneige lip masks are the best. So मैंने Amazon order भी किया था और जब से ये Amazon package आया है मैंने अभी तक इसको खोला नहीं है. I know इसमें क्या है, and it's not a very interesting package. So I don't know. It's called 4-liver. So in general, this is called snake to unclog your tub, sink or anything. तो जो मेरा बाथ टब है उसमें मेरे खुद के बाल इतने ज़्यादा हैं तो मुझे ऐसा लग रहा था कि वो पानी रुक रहा है उसमें. लाइक इट्स नॉट फास्ट इनफ, वो जल्दी ड्रेन नहीं हो रहा है. सो आई एम गोइंग टू यूज दिस टू अनक्लॉग माई बाथ टब. दैट्स रिडिकुलस. ऑनेस्टली स्पीकिंग, yes, this is the season where I'm actually having a lot of hair fall. और उसकी वजह से मुझे थोड़ा सा स्ट्रेस भी हो रहा था. There's few things that I have done in my hair care routine. Like I've changed few things and I will actually show you कौन सा hair oil लगा रही हूँ और कौन सा shampoo, conditioner, plus तो कौन से supplements मैं ले रही हूँ अपने hair के लिए वो भी मैं आपको बताऊंगी. And stay tuned for that as well. So yeah, I think I should actually go take shower, wash my hair, and I'm gonna show you what products I actually use and how I'm keeping my hair healthy. I don't know if you guys have noticed, most of the time जब भी मैं कोई makeup video, sit down video करती हूँ ना, तो मैं हमेशा watch का camera on रखती हूँ so I can see what actually like you know you guys are seeing. Like मेरा कैमरा चल रहा है, वीडियो ऑन है, everything, कौन सा एंगल है, तो इसमें सही दिखता है.
Alright, so सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि मेरे hair oil, like I've changed few things in my hair oil routine. I love my hair oiling. मुझे चम्पी करवाना अच्छा लगता है, मुझे चम्पी करके रखना अच्छा लगता है. And I've been doing this for years. My mom used to do that. Now I'm like just here like by myself. So I do that, and I'm gonna show you what products I'm using. So in Canada, it's easy to get these products off Amazon. और अगर आपके like area में कोई Indian store है तो वहाँ से भी आपको ये hair oil मिल जाएगा. So first things first, I love using coconut oil, but यहाँ पे winter इतनी ज़्यादा harsh है और dry है. So I've been stopped using coconut hair oil. I feel like उससे भी मेरा थोड़ा hair fall ज़्यादा हो रहा था. So this is the Indian brand actually, Bajaj Almond Drops. If you're Indian, you know ये hair oil कितना अच्छा है. It's a little too oily अगर आप अच्छे से wash ना करो, and that's what happened. ये मैंने first time last wash में use किया था, तो मैंने थोड़ा सा ज़्यादा hair oil लगा लिया था. Even after washing my hair twice, वो तेल निकला ही नहीं है बालों से. मेरे मतलब बाल ऐसे लग रहे थे कि अभी भी ऑयली है. बट I'll make sure कि मैं इसको कम अमाउंट में लगाऊं, just in the roots, not all over my hair. So this is the one that I am using for a basic hair oil. And then I'm gonna like जब भी मैं concoction बनाती हूँ hair oil का, तो मैं ये डालती हूँ. फिर मैं डालती हूँ organic castor oil. You can get this from Amazon. That's where I got it from. It's good for hair, skin and nails. तो ये वाला organic, इसके मैं few drops लगाती हूँ because it's a very thick oil. And the next I always add is Botanic Health ka rosemary oil. Again, few drops because I don't want this like the concoction में ज़्यादा strong rosemary की smell ना आए. ये बहुत ही ज़्यादा strong rosemary oil है, तभी मैं इसके I think 3 to 4 drops डालती हूँ. तो इन तीनों products का मैं mixture बना के then I microwave it for like 20 seconds. अच्छा सा warm oil बन जाता है वो. And then I just rub it around the roots. उसको अच्छे से मसाज करके I keep it either overnight, but I've been not doing that because उसकी वजह से मुझे acne भी आ रहे थे. तो मैं सुबह लगा लेती हूँ, तो शाम को मैं अपने बाल धो लेती हूँ. Just like I did this morning. मैंने rosemary लगाया just because मुझे कुछ roots में ऐसा लग रहा था कि गंजी हो रही हूँ मैं. तो that's why I did that. Concoction, this is really good if you're having hair fall. अगर आपको अपने बाल की डेंसिटी अच्छी करनी है, टेक्सचर अच्छा करना है, this is so freaking good. You'll see the change not right away, but after a few weeks you'll see the change. So yeah, you guys can give it a shot, and it's helping me. I hope it's gonna help you. Alright guys, so for the shampoo and conditioner, I've been trying to use more clean products like no sulfate, no dyes, no paraben, like the one that's going to damage my skin, my hair. So this is Durkos. You know Vichy brand you can get from Sephora, Amazon. So Vichy brand का ये है no sulfate, ठीक है? It's going to help for my hair loss. It's gonna complement care. Whatever. इसमें vitamin E है और niacinamide है. I've been using this shampoo for a while. I love it because I feel like वो थोड़े से कम hair fall कर रहा है. So for the conditioner, I've been using Attitude का Sensitive Skin. This is also fragrance free, sulfate free, paraben free. Any dyes, like there's no chemicals in it. It's a very clean. Also, it's I think plant based. I'm not sure. I don't know if it's plant based. So इसमें सोया और oats के protein है और ये natural ingredients से बना है. So this is a really good conditioner. I've been loving this, and yeah, this is the two products that I'm using. और इसका थोड़ा सा भी amount लोगे ना, your like वो बहुत foamy और soapy हो जाता है. You do not need too much product. So this is what my
hair products are जो मैं अपने बाल धोने में use करती हूँ. And now I'm gonna go take shower, wash my hair, and then I'll be right back. Let's do a transition, shall we? Alright, so मैंने shower ले लिया है. This is literally after an hour. I started cleaning my bathtub and मैंने unclog भी कर लिया है, so I'm happy about that. और मैंने क्या किया था, हाँ मैंने बाथरूम साफ कर लिया, फिर मैं नहाई. I like sat in the tub for a while, गर्म पानी में वो bath salt डाल के, bath bomb डाल के. Like I had a everything shower. So yeah, I'm gonna quickly do my skincare. So like this is good to go क्योंकि मैं बहुत dry feel कर रही हूँ. और this is the update that I have with Adapalene. यहाँ पे इतने दाने थे, ये काफ़ी कम हो गए हैं, but I can still see it. Well, you know, I talked about this in my last vlog, so I'm gonna quickly do my skincare while I... So now I'm gonna quickly do my skincare. ये मेरा खुद का personal bathroom है क्योंकि I also want to show you what I do after washing my hair. तो मेरे पास ना ये Marc Anthony का Repair Bond serum है. This is really good. It also has heat protection in it. तो मुझे 2 products नहीं लगाने पड़ते. That serum and hair protection. ये एक ही में सब काम कर जाता है. So I always go here. Roots पे इतना नहीं लगाऊंगी. And then once I'm done with this, and then I'll put my head wrap on. Alright guys, अभी मैंने change कर लिया है and I thought to wear my favorite pink hoodie. Plus I have this pajama. ये बहुत ज़्यादा अच्छा इसके साथ match कर रहा है. And I love this, the bows on it. So fucking pretty. Yeah, and I think I don't know if I should make something right now. I feel like थोड़ी सी भूख लग रही है. My nose is itchy. I don't know if I should make something right now. थोड़ी सी भूख भी लग रही है, but I think we can stack on something. So yeah, I think let's start with our wrapping our Christmas gifts. And I want to finish that. It's going to take me a while. So I'm going to show you what I have bought for the people. Plus मैंने cute से gift wraps भी लिए हैं. So let's do that. तो मैं आपको बता रही थी वो जो coconut chia seed pudding मैंने बनाई थी रात को. और मैंने सुबह भी ट्राई की थी, थोड़ी सी खाई थी. एंड दिस इज़ द वन दैट आई एम टॉकिंग अबाउट. ये इतनी अच्छी है, आई एम नॉट किडिंग. और ये कुछ ऐसी दिखती है, लाइक थोड़ा थिक कंसिस्टेंसी. सो फॉर दिस रेसिपी आई हैव यूज्ड कोकोनट मिल्क. और ये थोड़ा चंकी कोकोनट मिल्क था, लाइक इट वाज रियली थिक. आई हैव यूज्ड चिया सीड, कोकोनट मिल्क, हनी, and a little bit splash of vanilla essence so that I can get the flavor or acha lage. Honestly, this is so good and healthy. A few moments later. Alright guys, now is the time to wrap all our presents and I'm gonna sit on the floor and then do it. I have all the gifts here. तो ये सारे gifts यहाँ पे. और मेरा wrapping paper इस season का ये वाला है. If you can see, there's a green plaid और उसमें gold है. And the other one is the brown with the red Santa hats, gloves, socks, तो वो सब है. And I also have those kind of ribbons. ऐसा सा कुछ ribbon है मेरे पास. तो मैं ये चढ़ाऊंगी शायद उसके ऊपर. And yes, I think let's start. I'm probably gonna do green. Okay. तो शायद मैं कम बात करूँ, so I'm gonna like fast forward the wrapping situation. ये इतना अच्छा लगता है ना मुझे, plaid color का wrapping. It's so cool. So let's start with this first. I don't know if you guys can see actually. Where's my scissor? So I just changed the angle because I feel like आप लोग मुझे देख नहीं पाओगे. So first of all मुझे wrap करना है. So I got the Dove Men Care set. इसमें है shampoo, body wash and deodorant. And I'm not gonna tell you किसके लिए है.
because it's a surprise. It's not a surprise, it's for Christmas. So yeah, I'm going to quickly wrap this. This is how I have wrapped my Christmas present. I think मेरे पास नए वाले tags हैं, but I don't know like other than this मुझे कहीं मिले नहीं है. या तो मैं लेके नहीं आई हूँ या तो मुझे ऐसा हो रहा है कि मैं लेके आई हूँ but मैं नहीं लेके आई हूँ. So मैं पुराने वाले use कर रही हूँ, gold with the gold ribbon, and yeah, this is the one I have. तो मेरा first wrap हो चुका है. Team, अब मैं फटाफट से इसको wrap कर लेती हूँ while I listen to my music. And then I'm gonna make a small montage, fast forward wala. So enjoy karo. Alright guys, मैंने सारे gifts wrap कर लिए हैं. You can see all the mess that I have created. ये सारे इधर हैं. These are separate. अभी मैंने name tag नहीं लगाया. Plus I haven't हाँ मैंने बस name tag नहीं लगाया. I haven't used ribbon on the green ones because ribbon में ये वाला कम हो रहा था. तो जो red वाला है, I think I love this aesthetic. It's really cute. तो मुझे name tag लेके आने हैं. And this is what's the final, and I don't think so there's anything else. No, there's one more gift that I have to wrap and I'm waiting for it to be delivered. तो ये है so far हमारा view, और उधर मैं जाके रखती हूँ. And these are also gifts from somebody, but I'm not allowed to, like nobody's allowed to open this until Christmas. And I'm like, who's going to wrap this? So I believe unwrapped gifts milenge. But this is the Amazon package. तो ये हम सिर्फ और सिर्फ Christmas वाले दिन खोलेंगे. And yeah, I'm just going to put this up like, you know, under the tree, and then we're gonna go eat something.
we go. That's done. मैंने थोड़ा aesthetically decorate करने की कोशिश की है, but वो कोशिश नाकाम रही. So yeah. Alright guys, तो ये है आज का dinner. I have cucumbers, dal chawal और fish tandoori, and this is what I'm going to eat today. I mean tonight. और I guess that's it for the video, like for the vlog. अगर आपको ये vlog अच्छा लगा, make sure you like, subscribe my channel, and I will see you guys in the next one. Love you, bye.